So the hearings are going on the 10th of June, 10th of July. The hearing was quite interesting. And on 20 and 29, they were interesting again, and we look forward to further interesting hearings. Let me start by saying why did we go to the court? What do we find wrong in the scheme of the special intensive revision? There are 2 or 3 general points. For example, all the rules and laws related to the election, whether they are in the Constitution, Article 324, 326, etc., Representation of People Act 1950, Representation of People Act 1951, Conduct of Election Rules 1966, and Registration of Electors Rules 1960. They mention only 2 types of revision. One is called a summary revision, and one is called an intensive revision. So this expression, special intensive revision, is a new invention of this election commission. It has never been used in the past. What they say was done in 2003 in Bihar was an intensive revision, not a special intensive revision. This may sound very flimsy, but when you are arguing it in the court, incidentally, I have been now a lawyer for 19 years. After I retired, I became a lawyer. So I tend to speak in these words. So in the court, it makes a whole lot of a difference. What is something called? So one, there is no provision of this in law. In addition to that, there were 3 specific legal issues with the notification that the Election Commission issued on 24th of June. The first problem was that the notification says that for people who are on the electoral roll on 1st of January 2003, there is a presumption of citizenship. If you say that I have 2 groups of people, they are presumed to be citizens. Lekin I don't say anything about you. इसका मतलब क्या रहेगा? हाँ, मतलब ये कि ये तो I presume that they are citizens, but for this group I do not presume, which means they are not citizens. So with this one statement, the Election Commission has created an artificial, random, irrational division amongst the people who are already on the electoral rolls and people who were on the electoral rolls people who were registered as electors from 2nd of January 2003 to 23rd of June 2025. They are 2.97 crores. आपने उन 3 करोड़ लोगों की वोट डालने की शक्ति को एक पेन के स्ट्रोक से ले लिया. In the law, there is a provision, there is a section called deletion of voters. Heading heading. Below that, there is a procedure given that if the Election Commission comes to get some information that a person is not eligible to be registered as a voter, although he or she is in the voter list, or somebody complains, ये छोड़ के चला गया है, ये मर गया है, और ये तो घुसपैठिया है, then the Election Commission by law is required to issue a notice to that person in Form 14 that it is proposed to remove your name from the electoral roll for the following reason. Please present yourself in the Election Commission's office on so-and-so date for a personal hearing. There are 2 important things. One, this notice is not a casual notice. The rule says that if the voter is not to be found, the notice should
pasted on the door of his last known address. And the other thing is that the person is given an opportunity for a personal hearing. During the personal hearing, the onus of proving that the registered voter name should be removed and what is the reason, the onus is on the election commission or the complainant, not on the voter. Because the Supreme Court has said in a case in 1995, Lal Babu Hussain versus the Electoral Registration Officer, दिल्ली का केस है, उसमें भी यही हुआ था. Those of you who are familiar with Delhi, there's a place called Daryaganj. वहाँ एक गोलचा सिनेमा है, उसके पीछे एक इलाका है पटिया महल. वहाँ लोगों के साथ ये चक्कर हुआ. उस जजमेंट में the Supreme Court has very clearly said that there are two categories of citizens. One who are on the voter roll and one who are not on the voter roll. Those who are on the voter roll, the election commission does not have a right to take away their voting rights without following due process, which is giving a notice, a personal hearing. So here 2.97 crore people's voting rights have been taken away without following the due process. This is problem number one. It is just straight violation of the law. कहने को इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि जितने लोगों के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नहीं है 65 lakhs, they will all be given notice. अरे वो बात की बात है. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि when the election commission removed their names and said that they are presumed to be citizens, they are not presumed to be citizens. Election Commission is exercising an authority which does not lie with it. The authority of determining citizenship under the Citizenship Act of 1955 is with the Home Ministry. Home Ministry or foreigners tribunals set up under that Citizenship Act. They have this authority to decide who is a citizen, who is not. Election Commission does not have it. So I have said in some discussion कि अपना काम तो करते नहीं है और दूसरों के काम में टांग रहे. हाँ, तो अपना काम करिए. जो what is election commission job is to facilitate citizens for exercising their right to vote. Election Commission has come to think today it is a God, you know, जो कह दिया वो सब पत्थर की लकीर है. Election Commission was set up in 1950 so that citizens who have a right to vote, how do they exercise this right to vote? To facilitate and assist citizens for exercising their right to vote. So in real terms, it is what today would be called a service organization. कि मेरा काम है आपको सर्विस देना, लेकिन वो सर्विस क्या देगा वो तो पता नहीं क्या करना. Somebody has recently said that earlier people will used to choose who will form the government. Now the government will choose who will vote to form the government. तो उल्टा ये सब हो रहा. इसमें the second legal issue is exercising the authority to determine citizenship, which is not election commission's role. This was said in the very first hearing on the 10th of July when Justice Dhulia said, don't even go there, you will have a problem. They told the election commission about it. But वो अभी भी लगे हुए. This is the second legal problem. Third legal problem is even today in Karnataka or in any other state other than Bihar, if a person wants to get his or her vote registered afresh, that person has to fill a form called Form 6. उसमें आपको अपना नाम पता सब देना होता है. Then you have to give a certification or a verification which says I am a citizen of India. I was born in so and so place at so and so date.
and you have to provide a proof of the date of birth, not of the place of birth. In entire country except Bihar today and since 24th of June, July, आप ये कर जून ये कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं. In Bihar, you have to do the same thing, but the certification or the verification is changed. The verification says, if it says I am a citizen of India, born on so and so date, so and so place, I have to give a documentary proof for date of birth and place of birth, जो पहले नहीं था. अच्छा, उसके बाद है कि if you are born before 1987, then you have to, no, after 1987, you have to provide the proof of your name, of your place and date of birth, and the proof of place and date of birth of one of your parents. Written proof. And if you happen to be born after 2004, so not only do you have to give a written proof of your date and place of birth, your mother's date and place of birth, and your father's date and place of birth. Now, changing this verification, which effectively means changing the conditions of eligibility for a person to become a voter, has been changed by the Election Commission, which it is not allowed to change. ये तीन तो लीगल प्रॉब्लम है जिनको लेके हम गए थे. उनके साथ साथ there are a whole lot of procedural problems. For example, these 11 documents जिनके बारे में बहुत बात हुई है. One of those 11 documents is a high school leaving certificate. Now, I have been in the field of education for many years, and I have seen hundreds and thousands, maybe tens of thousands of school living certificates. No school living certificate gives the place of birth. It only gives the date of birth. And this is one of the 11 that they have specified. तो अगर मैं जाता हूँ अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेके कहेंगे अरे इसमें तो डेट और प्लेस ऑफ बर्थ तो है नहीं, दूसरा डॉक्यूमेंट लो. तो उनके खुद के डॉक्यूमेंट इतने गलत तरीके से स्पेसिफाई किए गए हैं कि उनमें इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं है. And out of these 11, I am told there are 6, 7. For getting those documents, you need an Aadhaar card. So, जिस आधार पे ये दस्तावेज बनेगा, वो आधार कार्ड आप बनी रहे. ये this is the illogic of that notification. उसके I will give you one more example of the illogic. On the 24th of June, the Election Commission issued 3 documents. There was a 1.5-page press note. There was a 19-page letter to the Chief Electoral Officer of Bihar, which included an order and a detailed guidelines for carrying out the SIR. In the 4th paragraph of the press note, let me read this out. In accordance with the section 23 of the Representation of People Act 1915, the eligibility conditions to enroll as an elector were already being verified by the electoral registration officer to his satisfaction. Electoral registration officer का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लेवल है वो देवसार साहब बताएंगे. वो बीडीओ होता है शायद या एसडीओ होता है या तहसीलदार. उसको इतनी पावर है कि वो डिसाइड करेंगे आप हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं कि नहीं. अच्छा, आगे सुनिए. ये दिस इज इलेक्शन कमीशंस ग्रेटनेस ऑफ हार्ट. नाउ to ensure complete transparency, it would be necessary that the documents on the basis of which such satisfaction of ERO is arrived at are also uploaded in the ECI net as the current level of technology enables so. If we are so generous that now we have new technology, we will
put these documents on our website. इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है? अगला सेंटेंस सुनिए. However, these documents shall be accessible to authorized election officials only, keeping in view the privacy of the issues. यानी हम वेबसाइट पर डालेंगे, लेकिन आप देख नहीं सकते जब तक हम आपको परमिशन न दें. ये ट्रांसपेरेंसी की नई डेफिनेशन. तो उसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल. तो वो और ये जो 24th को चिट्ठी इशू हो गया, 25th से 80,000 बीएलओ की ट्रेनिंग हो जाएगी. मैं भी ट्रेनिंग करता रहा हूँ पिछले 30-40 साल से. पहले ट्रेनिंग सोचना पड़ता क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उसके ट्रेनिंग मटीरियल बनाने पड़ते हैं. ट्रांसपेरेंसी है कि स्लाइड है कि पावर पॉइंट है कि कुछ और दूसरे एक्सरसाइजेस के थ्रू हो, वो सब सोचना पड़ता है. फिर उसको प्लान करना पड़ता है. Then 80,000 people cannot be trained in a football stadium. You have to put them in smaller batches in different places. That needs to be done. वो सारा 3 दिन में हो गया. The Indian Express carried a story on the 28th of July that the Election Commission has said 80 lakhs volunteers or 80 lakh BLOs have been trained. Yes. 80. Yes. BLOs. Although technically, finally there were only 77, but they said we have done it. Anyway, ये हो गया. उसके बाद और मैं आपको क्या क्या बताऊं. एक once you submit all these documents, even if you do, अब वो पहले था कि डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. On the 5th of August, नहीं, 5th of July, the Bihar Chief Electoral Officer issued an advertisement, full-page advertisement on the front pages of all newspapers in Hindi, in Bihar, saying if you cannot submit documents, there is no problem, just submit your form. Documents can be submitted later. So Bihar, where people were very happy, and some major news channels said Election Commission goes back, Election Commission gives in, whatever. उसके नीचे there were 4 lines at the end of the page in small letters. The last line said, if documents are not available, the decision will be taken based on available information. ये 5 तारीख को Chief Electoral Officer of Bihar issued this advertisement at people's money, हमारे पैसे. On the 6th of July, Election Commission of India in Delhi issued a press note that there is no change in the procedure. Documents have to be submitted. If somebody cannot submit them with the form, they must submit it by 25th of July. Next sentence. If there is any deficiency in the documents, the ERO or AERO can collect them during the claims and objection procedure from 1st of August to 31st of August. तो मुझे आज तक नहीं पता कि आखिरी तारीख डॉक्यूमेंट सबमिट करने की 25 जुलाई थी कि 31 अगस्त. दिस इज द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. अच्छा, आपने सब दे दिया, उसके बाद क्या हुआ? Period of claims and objections. After publication of the draft electoral roll, ERO/AERO shall scrutinize the eligibility of proposed electors in accordance with the qualification of electors, etc., etc. In case the ERO or AERO, Nayab Tahsildar, doubts the eligibility of the proposed elector due to non-submission of requisite documents or otherwise, कुछ भी वजह हो सकती है, क्या करेगा? He or she will start a suo motu inquiry and issue notice to the proposed elector as to why his/her should not be deleted based
documentation or otherwise, AERO shall decide on the inclusion of such proposed electors in the final vote. In each case, the ERO shall pass a speaking order. Also, ये है कि the EROs will refer cases of suspected foreign nationals to the competent authority under the Citizenship Act 1955. For these purposes, the AERO shall exercise ERO's powers independently under sections also. एक तहसीलदार लेवल का सरकारी मुलाजिम सिटीजनशिप एक्ट के तहत आपकी शिकायत होम मिनिस्ट्री में कर सकता है। जब मेरा पहला इंटरव्यू इस बात पे हुआ था ये करण थापा के साथ, मैंने उसको ये बताया, you know, a person name can be sent to the home ministry for saying he is or she is a foreign national. So Karan Thapar said, so that person will be deported. It is a possibility. तो ये इस हद तक बात हो रही है। फिर एक दूसरा पहलू है जो मैं हर दफा कहता हूँ और कहना चाहिए मुझे, चलिए बीएलओ तो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग क्या उसको टीचर वगैरह हैं, उनको लगा दिया जाता है इस काम पे, उनको 6,000 रुपए वो भी दिया जा रहा था ऑनरेडी। Then the election commission said there are 1 lakh BLOs and 1.5 lakhs BLAs, booth level agents, who have been appointed by political parties. And each BLA, an appointee of a political party, was authorized to collect 50 enumeration forms and documents and submit them officially. आज से 15-20 साल पहले जो आप लोग सब जवान थे या जवान में बैठे हैं, आप लोग शायद थे नहीं, ये कहते थे हम लोग कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने फर्जी वोटर दौड़ा देती हैं इलेक्टोरल रोल। This was an allegation against political parties. Now the election commission is asking political parties to register voters. फिर वही बात, अपना काम करेंगे नहीं, दूसरों को ब्लेम करेंगे। उसके अलावा 1 lakh BLOs, 1.5 lakh BLAs and 4 lakh volunteers. The question that we asked is, what are these volunteers? How have they recruited them? How have you authorized them? How will you ensure that they are neutral, not partisan? किसी को पता नहीं वो कौन है, उनका सोचने का तरीका क्या है, कुछ नहीं पता। So electoral role under this so-called special intensive revision has been completely handed over to political parties and volunteers. This is again against the law. पहले ये होता था कि every work of the election commission is done by government employees who are deemed to be on deputation to the election commission during the election period. West Bengal का election तो पता नहीं कब होगा। Election commission has issued order to the chief secretary to suspend 3 government employees. वो स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं करेगी तो क्या करोगे, वो अलग कहानी है। So election commission in this case is guilty of, one way, there one Professor Zoya Hassan, political science professor from JNU, now retired, उन्होंने कहीं कहा है, ये मैंने वो सुना है कि इसको 3 तरीके से देखना चाहिए, intention, method and timing। इंटेंशन तो आपको अब तक समझ आनी चाहिए कि क्या इंटेंशन, मेथड भी आपको समझा दिया कि मेथड में क्या क्या गलती है। टाइमिंग में 2 तरह का टाइमिंग है, एक तो ये कि व्हाई इज इट बीइंग डन नाउ, व्हाई नॉट 6 months earlier or 1 year earlier or 6 months later, because the one of the judges in the on the 10th of May hearing, Justice Bachi, said, why don't you deal in the SIR from the state assembly election in Bihar? State assembly election आप नवंबर में करवा लीजिए,
keep doing your SIR, don't hurry it up. उसको आराम से करिए ताकि गलती ना हो। तो एक तो ये टाइमिंग रिलेटेड टू द इलेक्शन, दूसरा टाइम गिवन फॉर इट टू बी कंप्लीटेड। असम का एनआरसी साथ साथ चला था और वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लटका हुआ है बीच में। यहाँ 3 महीने में सब कुछ हो रहा है। तो इंटेंशन, मेथड और टाइमिंग तीनों चीजें सस्पेक्ट है। अब ये 65 लाख की लिस्ट आ गई, हमें 29 तारीख को कहा गया था कि आप 15 लोग ऐसे लाइए। हमें क्या सब पटिशनर को कहा गया था कि 15 लोग ऐसे लाइए whose names have been deleted for the reason that they are dead। यानी ये नहीं कि 15 लोग will be deleted for the reason that they have been dead and they are alive। तो हमने कहा चलो ढूंढते हैं। फिर 65 लाख की लिस्ट आई। अरे भाई 65 लाख की लिस्ट के एक तरफ से शुरू हो जाए बिहार में कि कौन जिंदा कौन मरा। हमने कहा भाई 65 लाख को आप 3 लिस्टों में बना दीजिए, जो जिनके नाम कटे हैं बिकॉज दे हैव डाइड, जिनके नाम कटे हैं बिकॉज दे हैव मूव्ड आउट ऑफ देयर करंट रेजिडेंस एंड आउट ऑफ बिहार, एंड थर्ड हु हैव डुप्लीकेट वोटर रजिस्ट्रेशन। ये 3 रीजन उन्होंने दिए हैं। उनको कहा कि इसको 3 हिस्सों में बांट के दे दो, दे देंगे। ये एप्लीकेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में परसों लगाई थी, ये उन्हें आज देना है 9 तारीख। तो देखेंगे क्या करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन का इंटेंशन, मेथड, टाइमिंग तीनों अलग है। वो इंफॉर्मेशन देता है, आपको शायद याद होगा वो इलेक्टोरल बॉन्ड केस में स्टेट बैंक नहीं दे रहा था इंफॉर्मेशन, उसमें भी हम ही लोग पटिशनर थे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले 3 महीने लगेंगे तो 3 दिन की बात है, आप परसों दीजिए, और दी उन्होंने परसों। तो यही काम ये कर रहे हैं कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते, कहते जब दे देनी, और कहते हैं हमने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया। मैंने एक्चुअली कई जगह ये कहा है कि मैं एक सिटीजन का इलेक्शन कमीशन से सीधा रिश्ता है, पॉलिटिकल पार्टी उसके बिचौलिए नहीं है कि वो हमारे इंटरमीडिएट हैं। जैसे हम सबका खुदा से सीधा रास्ता है, कोई पूजा पाठ करने वाला पंडित नहीं बीच में। तो मेरा इलेक्शन कमीशन से वो रिश्ता, और मैं पिछले 15 साल से नोटा को वोट देता हूँ, मैं किसी पार्टी को वोट नहीं देता। वो कह रहे थे हमने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया है, उनसे ले लो। उनके पास जाते हो कहते हैं हमारे पास ये अलग अलग लिस्ट तो है नहीं, हमारे पास तो 65 लाख की लिस्ट है। तो आधी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। They want to confuse people. So the whole process is wrong in the way it is being conducted. Verifying the electoral roll is a very good thing, it must be done. But it should be done on a regular basis around the year. आप साल में 4 दफा तो करते हैं, जनवरी, 1 January, 1 April, 1 September, 1 December। हो रहा है बिहार में जो जनवरी में हुआ था 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेके, वोटर लेके घर घर जाइए, चेक कीजिए कौन बढ़िया कौन चला गया, उनके नाम काट दीजिए, जो 18 साल के हुए उनके नाम जोड़ लीजिए। This is how it has been done for 70 years. So I have also given this example in some places that USA decided to introduce democracy in Iraq. Since हमारी सरकार नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, हम बड़े खुश हुए डेमोक्रेसी आएगी भी यहाँ, लेकिन डेमोक्रेसी लाने के लिए लाखों लोगों को जान से मार दिया और उस मुल्क का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया। ये डेमोक्रेसी लाने का तरीका है। आप इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई कीजिए, उसको ठीक करिए, लेकिन ठीक तरीके से। एक होता है एंड और मीन्स, आपका ऑब्जेक्टिव तो अच्छा है, लेकिन जिस रास्ते से आप वहां पहुंचेंगे वो रास्ता गलत है, तो फिर आपका वो फाइनल डेस्टिनेशन भी गलत है। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि दिस विल बी डन इन द एंटायर अबाउट वेस्ट बंगाल। The chief electoral officer of West Bengal has convened a meeting. I have seen a notice for SIR in 2027 or something. दिल्ली में एक मीटिंग हो
चुकी है, एक और स्टेट है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ. So the action to do this in other states is already underway. And Bihar is a pilot project, and we have to make sure that this pilot project either stops or is done properly. हम लोग उसकी कोशिश कर रहे हैं. एक और फ्रिवलस बात है जो मैं कह दूँ, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं हमारी ऑपोजिशन वाली, वो उनकी अपनी धुन होती है. वो बिहार में घूम रहे हैं अपने लोगों को वोटर रोल में रजिस्टर करवाने, और दो बड़ी पार्टियों के लोग कह चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि हमें इस वक्त इलेक्शन की कैंपेन करनी चाहिए थी और अब हम नाम जुड़वा रहे हैं. मैंने उनसे कहा कि आप ना तो इलेक्शन की कैंपेन कीजिए, ना नाम जुड़वाइए. आप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स 200 people should demonstrate in front of the collector's office every day. Even if they get arrested or they get beaten up, they should do it. And political parties should go around telling people that the election commission is taking democracy away from you. Because if they say election commission is doing it to help BJP, वो जो BJP के सपोर्टर हैं वो चुस्त हो जाते हैं. आप इलेक्शन कमीशन का नाम लीजिए, उसको सॉरी ये गलत बात है, उसको बदनाम कीजिए, बाकी काम अपने आप हो जाएगा. क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करना या रखना हम अपना फर्ज समझते हैं. हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जीतने में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि एक बार वो हो जाता है तो आप न्यूट्रल नहीं रहता. तो इलेक्शन प्रोसेस को ठीक करवाना, इलेक्शन कमीशन, वो ये बात कभी खत्म हुई नहीं. इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हमने ही केस किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दिया कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए. उसके 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड ए मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. वो जो सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा था उसको गलत किया. अब हम उस कानून को लेके चैलेंज करके बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट में, उसकी नहीं हो रही. तो कानूनी जो रास्ता है बड़ा मुश्किल है और रिस्की है, लेकिन हमें पब्लिक या पीपल मूवमेंट करना आता नहीं, लेकिन इसमें जरूरत पीपल मूवमेंट की है. और बिहार हैज अ हिस्ट्री ऑफ पीपल मूवमेंट. द सिचुएशन इज राइट, but people in Bihar, political parties in Bihar, other people, civil society in Bihar will have to do this. But because if it succeeds in Bihar, then there's nothing stopping. Sorry, I am giving you a pessimistic picture, but this is what I see.